Good morning, students. Welcome to you all in chemistry class. Today we are going to discuss states of matter. Matter around us exists in three states, three forms. These are solids, liquids, and gases. Matter होता क्या है? Anything that occupies space and has a mass. उसको हम क्या कहते हैं? Matter. Iron, wood, table, chair, chalk, duster, book, notebook, sand, gold, ice, pen, pencil. All these are the examples of solid states of matter. All these are example of solid state of matter. Then water, milk, kerosene, alcohol, petrol, cooking oil, juice, cold drink. These are the examples of liquid form of matter. Oxygen, nitrogen, hydrogen, ammonia, LPG, carbon dioxide, CNG, ये examples किसकी हैं? Gaseous states of matter की. अब अपनी बॉडी में देखिए कि जो बोन्स हैं, टीथ हैं, वो क्या हैं? सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर. एंड ब्लड, लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर. कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन आर गैसियस स्टेट ऑफ मैटर. These three states of matter, solid, liquid, and gas, arise due to characteristics of particles of matter. क्या होते हैं characteristics of particles of matter? First characteristics of particles of matter. Particles of matter have space between them. Space between them. Second, particles of matter are continuously moving. Third, particles of matter attract each other. These three states of matter, solid, liquid, gas, are due to the characteristics of particles of matter. Before discussing the properties of these three states of matter, let's discuss the packing of the particles in these three states of matter. In solids, particles are tightly packed. They're very closely packed. If they are closely packed, it means जो इनके particles में space है, वो क्या होती है? कम होती है. Interparticle spaces are the smallest. What is interparticle space? Space between the particles of matter is known as interparticle space. In solid, the particles are tightly packed. It means जो interparticle space है वो क्या बहुत ज़्यादा कम होती है. And interparticle force of attraction. Interparticle forces of attraction. अब interparticle forces of attraction क्या होती है? The attraction between the particles of matter. अब अगर solid के particle tightly packed हैं, it means जो इनमें interparticle force of attraction है वो बहुत ज़्यादा strong होती है. Next, in liquid, particles are less closely packed. It means the interparticle distances, interparticle spaces are larger than those in solid but smaller than those in gases. अगर हम बात करें interparticle force of attraction की, then interparticle forces of attraction are weaker than those in solids but stronger than those in gases. Next state of matter, gas state of matter. Now in gaseous state of matter, particles are very loosely packed, means they are free to move. अगर वो free to move है, means उनमें जो space है वो क्या है? बहुत ज़्यादा है. Interparticle space क्या है?
मैक्सिमम है। एंड इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसमें क्या होगी, बहुत ज्यादा वीक। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड स्टेट। फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड स्टेट इज सॉलिड्स हैव फिक्स्ड शेप एंड डिस्टिंक्ट बाउंड्री। The particles of solids are tightly packed, very closely packed. If these particles are closely packed, it means कि इंटर जो पार्टिकल डिस्टेंस है बहुत स्मॉल है, and there are strong interparticle forces of attraction. Due to these small interparticle distances and strong interparticle force of attraction, solids have fixed shape and distinct boundaries. Now answer this question. Sugar and salt, when kept in the jars of different shapes, they take the shapes of jar, indicating that they do not have fixed shape. Does it mean these are not solids? The answer is given in your NCERT book on page number 4. Does it mean sugar and salt are not solid? The shape of each individual sugar or salt crystal, हर एक क्रिस्टल शुगर और सॉल्ट का देखिए तो उसकी जो शेप है वो क्या है, फिक्स्ड है। अगर इंडिविजुअल शुगर के और सॉल्ट के क्रिस्टल की शेप फिक्स्ड है, मींस वो क्या है, सॉलिड्स हैं। वेदर वी टेक इट इन आवर हैंड, पुट इट इन द प्लेट और इन द जार। ओके, solids and sugar and salts are solids. They have fixed shape because the shape of each individual crystal क्या है, fixed. Next property of solids possess rigidity. What is rigidity? Rigidity means the solids have tendency to maintain the shape when some outside force is applied. Write on the definition of rigidity. Solids have tendency to maintain the shape when some external force is applied on it. Answer this. Rubber band changes its shape on stretching. Then why do we classify it as a solid? जबकि हम क्या कह रहे हैं, जो solid है वो क्या, rigid है. Solids have tendency to maintain the shape when some outside force is applied. और रबर बैंड अपनी शेप चेंज कर लेता है जब हम उसको स्ट्रेच करते हैं. देन व्हाई डू वी क्लासिफाई इट एज अ सॉलिड? आंसर इज गिवन इन योर एनसीईआरटी बुक, पेज नंबर 4. A rubber band changes the shape under force and regain the same shape when force is removed. रबर बैंड के ऊपर जब हम फोर्स रिमूव कर देते हैं वो फिर से अपनी शेप को क्या कर लेता है, रीगेन कर लेता है. दैट्स व्हाई रबर बैंड इज अ सॉलिड. नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड. सॉलिड्स हैव, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, सॉलिड्स हैव फिक्स्ड वॉल्यूम. अब बुक का जितना वॉल्यूम है, जितनी बुक ने स्पेस ऑक्यूपाई करनी है उतनी ही करनी है. चाहे आप इसको टेबल पे रख रहे हो चाहे बेड पे रख रहे हो, उसका वॉल्यूम, उसका जो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है वो हमेशा क्या रहेगा, फिक्स्ड. इट मींस सॉलिड्स हैव फिक्स्ड वॉल्यूम. नेक्स्ट प्रॉपर्टी, सॉलिड्स हैव हाई डेंसिटी. डेंसिटी इज इक्वल टू mass divided by volume. मास की ऐसे यूनिट्स क्या होती हैं, किलोग्राम, और वॉल्यूम की मीटर क्यूब. तो डेंसिटी की यूनिट्स क्या होगी, किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर. डेंसिटी को हम लिखते हैं रो के साथ, एंड मास स्मॉल m एंड वॉल्यूम कैपिटल V. Density is directly proportional to mass.
अगर मास इंक्रीज होगा तो डेंसिटी भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज। अगर मास डिक्रीज होगा तो डेंसिटी भी क्या हो जाती है, डिक्रीज। एंड डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। अगर वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज। डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम and directly proportional to mass. In solid, particles are tightly packed. If particles are tightly packed means less space is occupied by solid. Less space का मतलब क्या होता है कि वॉल्यूम कम है। वॉल्यूम कम मीन्स डेंसिटी क्या है, हाई, बिकॉज डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम कम हो जाएगा तो डेंसिटी क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। वॉल्यूम डिक्रीजेस मीन्स डेंसिटी increases. So solids have high density. Next property of solid. Solids have negligible compressibility. Write on the definition of compressibility. Compressibility means tendency to decrease the volume when some outside force is applied. Compressibility means tendency to decrease the volume when some external force is applied on it. अब जो सॉलिड्स हैं उनमें पार्टिकल्स क्या टाइटली पैक्ड हैं और उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा है और जो इंटर पार्टिकल स्पेस है बहुत कम है, इसलिए आप उसको उसके वॉल्यूम को कम नहीं कर पाते हो विद एक्सटर्नल फोर्स। तो सॉलिड्स हैव नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी। नाउ आंसर, अ स्पॉन्ज इज अ सॉलिड एंड कैन बी कंप्रेस्ड इजिली। व्हाई? स्पॉन्ज क्या है, सॉलिड है, लेकिन आप उसको कंप्रेस कर पाते हो। लेकिन हमने अभी अभी सॉलिड की एक प्रॉपर्टी डिस्कस की है। सॉलिड्स क्या है, वो कंप्रेस नहीं होते हैं, जबकि स्पॉन्ज या एक सॉलिड है और उसको इजीली कंप्रेस कर पाते हो। व्हाई? अ स्पॉन्ज हैज माइन्यूट होल्स in which air is trapped. When we press it, then air is expelled out and we are able to compress it. नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि जो सॉलिड्स के पार्टिकल्स हैं वो डिफ्यूज नहीं करते हैं। व्हाट इज डिफ्यूजन? इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर ऑन देयर ओन is known as diffusion. Why there is no diffusion? Due to small interparticle distances and strong force of attraction. अगर force of attraction strong है means these particles of solids are not able to move from their position. They only vibrate around their mean position. That's why there is no diffusion in solids. Next है properties of liquid. फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि लिक्विड में फिक्स्ड शेप नहीं होती, बट लिक्विड्स हैव फिक्स्ड वॉल्यूम। लिक्विड्स में फिक्स्ड शेप्स नहीं है मींस दे टेक अप द शेप ऑफ द वेसल इन विच दे आर प्लेस्ड। अगर आप वाटर को किसी कंटेनर में रखते हो, फ्लास्क में या टेस्ट ट्यूब में, तो वो उसी की शेप को अटेन कर लेता है, मींस लिक्विड की शेप जो है वो फिक्स नहीं है। नेक्स्ट, लिक्विड्स आर नॉट रिजिड but have the property to flow. Due to large interparticle distances and weaker forces of attraction than in solid, liquids can flow. Liquids are not rigid, they possess fluidity. Fluidity. The fluidity, that is tendency to flow, differ from one liquid to other. For example, water flows faster than honey or glycerin. Next property of liquid, density of liquids is lower than those of solids. Density is equal to mass upon volume. Density is inversely proportional to volume. ठीक है ना? Now, due to larger interparticle distances, liquids का volume क्या होता है? ज़्यादा, तो density क्या हो जाएगी? कम. Density of liquid is lower than those of solids. Liquids possess property of diffusion. What is diffusion? Intermixing of particles of matter
intermixing of particles of different types of matter on their own is known as diffusion. Now in liquids, there are large interparticle distances than in solids, and the particles of liquids have freedom of motion than those of solids. अगर वो freely move कर पा रहे हैं means उनकी intermixing भी हो रही है. Intermixing means diffusion. Diffusion of solids in liquids, for example, copper sulfate in water, potassium permanganate in water, salt or sugar in water. These are the examples of diffusion of solids in liquids. Diffusions of liquid into liquids, for example, water in alcohol and ink in water. Next, diffusion of gases in liquids, for example, oxygen in water. Liquids possess property of diffusion, and the rate of diffusion increases with increase in temperature. Properties of gaseous state. Gases neither have fixed shape nor fixed volume. Means gases acquire the shape of vessel in which they are placed. तो इनकी शेप क्या है? फिक्स्ड नहीं है. Now, इनका वॉल्यूम भी क्या है? फिक्स नहीं होता. If a gas is transferred from smaller vessel to bigger vessel, it fills the bigger vessels. It means the volume of gas is equal to container. Gases have maximum tendency to flow. Next, gases have low density. We know the particles of gases are very loosely packed. Very loosely packed means volume of given mass of gas is large. It means density क्या हो जाएगी? Low. Gases have low density. Gases diffuse very rapidly because the particles of gases are very loosely packed, and interparticle force of attraction are very, very weak. That's why gases can diffuse very rapidly. Gases are highly compressible. What is compressibility? Tendency to decrease the volume when some external force is applied on it. Gases are highly compressible. Interparticle spaces in gaseous state are very large, and they can be decreased by applying pressure. There is an activity in your NCERT, activity 1.1, to explain the compressibility of 3 states of matter. Take 100 ml syringe, 1, 2 and 3, and close their nozzles by rubber cork. रबर कॉर्क के साथ आपने नोजल्स को क्या कर दिया? क्लोज कर दिया. And remove the piston from all the syringe, leaving one syringe untouched, and fill the water in second and pieces of chalks in third. Now insert the pistons and try to compress the content by pushing the pistons in each syringe. What do you observe? Piston of first syringe, which contain gas, moved in on applying pressure. This means on applying pressure, gas gets compressed. It means gases are highly compressible. The piston of second syringe, which contain liquid, moved in only slightly on applying pressure. This means that liquids are slightly compressible. And piston of third, which contain solid, did not move in at all. This means the solids are completely incompressible. From this activity, it is clear that the gases are highly compressible
Liquids are slightly compressible, only slightly compressible, and solids are completely incompressible. Next is gases exert pressure. We know that particles of gases are moving continuously in different direction with different speeds, and due to this random motion, the particles of gas collide with each other and also with the wall of container. And due to these collision, the particles of gas exert a force on the wall of container, and this force per unit area exerted by the particles of gas on the walls of container is known as pressure. It means gases exert pressure. Write down the differences between solid, liquid and gas in your chemistry notebook. पॉइंट्स नोट कीजिए जिनके बेस पे आपने सॉलिड, लिक्विड एंड गैस को डिफ्रेंशिएट करना है. फर्स्ट, पैकिंग ऑफ पार्टिकल्स, then interparticle space, interparticle forces of attraction, shape and volume, rigidity and fluidity, density, then compressibility and diffusion. Note down these points and write down the differences between solid, liquid and gas.